बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चार्ल्स डिकन्स का फेमस नावल टेल ऑफ द टू सिटीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने सर अमर बिन अदल, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम है, जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, उनके ख्यालात को बयान कर सकूँ। इस वीडियो में हम राइटर के बारे में बात करेंगे, फिर नावल, और आखिर में हम जो है नावल के मुतल्लिक़ जो मशहूर क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी बार बार रिपीट करती है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल वर्ल्ड ऑफ द लर्निंग बाय एच बैट, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन, 1812 टू 1870। 1812 जो है ये राइटर की डेट ऑफ बर्थ है और 1870 राइटर की डेट ऑफ डेथ है। फ्रॉम 1832 टू 1901 we have the Victorian age. 1832, death of the famous novelist सर वाल्टर स्कॉट, जो कि रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। In 1901 we have the death of the Queen Victoria between 1932 up to 1901, the Victorian age. 1901 क्योंकि डेट ऑफ डेथ है विक्टोरिया की, इसलिए विक्टोरियन एज हमारा यहाँ तक मुहित है। एवरी एज हैज इट्स कल्चरल अचीवमेंट, spirits, ideas. The greatest cultural achievement of the Victorian age was its novel. हर एज की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो विक्टोरियन एज की जो है स्पेसिफिकेशन क्या है कि नावल इसमें फ़रोग पाया, अचीव हुआ, हासिल हुआ। As drama was the greatest cultural achievement of the Renaissance. Poetry was cultural achievement of the Romantic age. Prose was greatest cultural achievement of the 18th century. एज ऑफ द न्यू क्लासिसिज्म, 18th सेंचुरी क्योंकि हमारी न्यू क्लासिसिज्म की एज कहलाती है, तो इसमें प्रोज जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। इट इज़ इन लिटरेरी जॉनरा एवरी एज we have a prominent or the leading literary genre. It is in this literary genre we have the expression or manifestation of its spirits or ideas. The ideal spirit of an age are the best expressed through its leading literary genre. Novel is the greatest cultural achievement. We have the spirit of the age in 19th century expressed through poets. In 18th century, we have prose writers, Bunyan, Swift. Similarly, we have in Victorian age hundreds of the novelists. Even PM of the England was also the novelist. Every age has its cultural achievement, which is always found in fine art. One of the fine arts become popular as big a criticism as big the range of the expression of that spirit. As many means of communication, the greatest age in Russian Rome, British age, we have all of fine arts, painting, music, literature, architecture, poetry, drama, novel, prose, etc. In novel, we have the early Victorian and we have the later Victorian. In early Victorians, we have Trollope and Dickens.
early generation of the Victorian novelist, Bronte's sister, George Eliot, later Victorian genre stars from George Eliot, Thomas Hardy, Barchester Tower, Name of the Palace, Dickon are the Tale of the Two Cities. बर्चेस्टर टावर एंटोन ने लिखी है और टेल ऑफ द टू सिटीज चार्ल्स डिकन की लिखी हुई है. अनडाउटली द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज वाज डिकन. डिकन विक्टोरियन एज का बहुत बड़ा नॉवलिस्ट है. ही रोट ओलिवर ट्विस्ट, पिकविक पेपर, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स, डेविड कॉपरफील्ड और टेल ऑफ द टू सिटीज. ये इसके फेमस वर्क हैं. मोस्ट popular novelist writing in abundance. When Dickens wrote this novel, some appreciation, some criticizing. कुछ राइटर ने इसको क्रिटिसाइज किया और कुछ राइटर ने इसको प्रेज भी किया इसकी राइटिंग की वजह से. Some critics started criticizing him, limited in their canvas. कुछ राइटर ने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये एक कैनवस के अंदर रह के अपने आप को महदूद करके लिखता है. He is all the time concerned either this aspect or that. Don't have vastness and the richness are typical Victorian, everywhere Victorian age. So he was called a typical temporal writer, limited in approach. Dickens accepted challenges and wrote A Tale of the Two Cities. डिकन ने इस चैलेंज को कबूल किया और प्रूव किया कि वो सिर्फ एक कैनवस के अंदर नहीं लिखता और उसने अपना एक फेमस नावल दिया टेल ऑफ द टू सिटीज के नाम से. ही चेंज द बैकग्राउंड सेटिंग, बैकग्राउंड चेंज कर दी उसने, सेटिंग चेंज कर दी नावल की. नो मोर विक्टोरियन, कोई विक्टोरियन एज का रेफरेंस नहीं उसने दिया. इंग्लैंड सेटिंग इज the other side of the England Channel. We have English and we have France, and a narrow strip of the writer separates England from France. England and Iceland, one of the biggest islands all around the Atlantic Ocean. The width of the strip is 37 kilometers, called English Channel. The first aeroplane crossed the English Channel and it was said world is going to be global. Dozens of the swimmers crossed the English Channel without taking rest. Now under the English Channel we have a tunnel through land. England and France are connected. Dickens crossed the English Channel. The setting is in France at the time of the French Revolution, which took place in 1789. The time period 1778 to 1793 has been captured in our novel. Before, during, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन आवर नावल. नावल के अंदर राइटर ने रेवोल्यूशन के इब्तदाई हालात, रेवोल्यूशन के दरमियान और रेवोल्यूशन के बाद के जो हालात थे उनके बारे में डिस्कस किया है. अप्रॉक्स 15 years have been captured. We are in France. Paris is the time of the revolution. Setting the novel begins with the journey from England to France, from France back to England, from London to Paris and back to London. Journey. The French Revolution is one of the greatest events in the history of the Europe.
It was a political revolution involving intellectual, social, economic affairs. Political revolution, but introducing its broad intellectual, economic, and the social revolution. Change of the order system, replacing kingship and aristocracy with democracy. It is with French Revolution we have the Europe entering in democracy. Most prominent development regarding a dramatic setup. Europe was on its way to be a democratic country, more and more democratic. We can never ever have a revolution without a philosophy. First comes philosophy and the philosophical thoughts, then we have change. Without a philosophy, the change is simply bloodshed and destruction. No nation can ever more a revolution without a philosophy. Certain ideas and the priest in ideas. We have a map of the new setting, destructive and defective setting. All were fed up. No one was happy, adversely affected with system. Everyone gathers under the banner of the philosophy, and the result is a change. Those who support the new system, they crushed the people, all bloodshed. The name of the philosophers was Rousseau, wrote of the France. Whole of the France come under the obsession spell. In 1789, only slogan was literary equality, brotherhood preached by Rousseau. They took up arms against million was killed and crushed. In this background, Dickens wrote his novel. फ्रेंड्स, ये चंद राइटर्स के बारे में और नॉवेल्स के आइडियाज़ थे। विक्टोरियन एज के बारे में थोड़ी सी हमने डिस्कशन देखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव मिलेगी। इंशाल्लाह नावल का जो बकिया हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।